Hello everyone, good evening. Good evening everyone. Pranam guys, pranam. Kuade ସବୁ ଥିଲ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଦେଖିଛି 85 ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମାନେ ନ ଆସିଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଣଟି ପକେଇବି गुड आफ्टरनून एवरीवन आफ्टरनून नाइ इवनिंग ହେଇଗଲାଣି ଆଉ चलो मौसुमी ଭଲ ଅଛି थैंक यू फॉर आस्किंग एई पचारना केमती अच्छी मौसुमीटा केते भल पिलाटा पचार सब मत केमी अच्छा मैम प्रणाम प्रणाम स्टार्ट करिबा क्लास ऑलरेडी आपण माने जानी चंती आपणकर टीचिंग रे एंड वेदांग क्लासेस रे आमर कौन पेड बैच सब लॉन्च हो सारे प्रभात 1.0 अच्छी लाइक कौन पीओ आरआई जोटा कि ओनली 1000 आप सब्सक्राइब पाइपर ओके हाँ हाँ तापरे 3499 जोटा कि हमारा महापैक प्राइस एंड मुझे आपको सजेस्ट करी कि जदि आपार अच्छी देन महापैक नि बिकज 1 ईयर भितर जिते भी आप एग्जामिनेशन आसो आमर या अंडर ही आस मैम अभी टी टाइम पीऊ ना मुझे मना कली मुझे देखी दूसरी तुम टी कुह पियो OSSC CGL अच्छी 1199 उत्कर्ष बैच दिस इज महापैक एंड दिस इज द प्रभात 1.0 ओके एंड किसी भी क्वेरीज अच्छी आपण मानको किसी प्रॉब्लम होउची ड्यूरिंग जते बेले आपण माने कोन बैच परचेस करूसंदी किसी भी प्रॉब्लम आसुची तो एई नंबर टाको आपण कॉल करिकी कोन प्रॉपर गाइडेंस पाई परिबे केमती कोन बैच परचेस करिवे हैला अरे बा पूरा पूरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ना कि हम नाम किंतु पढ़ी पानी कौन पढ़ी सेटा टाटेंडा 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 तातेंडा ताटेंडा कौन कहबी नाटा भारी अजीब दया तुम मानकर फर्स्ट क्वेश्चन तमे क्लास रु जाई कि माने चाटा पीवा पई मु तंटी काटुची मोटी गरम पानी मोर संगे धरिक आसु ना नहीं मु पुणी जदी कहबी मुटे पिले गरम पानी पी के आसुची पानी टे गरम करबी पुणी पी के आसीबी त माने चिड़ीबो ना नहीं कुआ त माने रागिबो ना नहीं कुआ तम माने रागले रागियो मु रागी परिबिनी माने तेरा कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता छाड़ो 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 ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी तो ना ब्लर अच्छी रे ठीक है वाटर वेपर इज दिस इज अ गैस दिस इज अ क्लाउड ड्रॉपलेट और दिस इज अ रेन ड्रॉप और दिस इज अ कौन ए स्नोफ्लेक कौन हम मत कहल राइट आंसर कौन हम राइट आंसर कौन हम यस वाटर वेपर इज अ वाटर इन द कौन गैसियस स्टेट दिस इज अ गैसियस स्टेट आमे कहि परिबा ओके वेरी गुड दैट इज ए गैसियस स्टेट कहि परिबा लाइक मॉलिक्यूल्स माने कोन ना डिस्पर्स्ड हेकी थांती एयर रे द मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और आमे कहि परिबा दैट इज द स्टेट ऑफ द गैस दैट इज अ गैसियस स्टेट्स एंड दैट्स द टेक्निकल टर्म आमे यूज करूचे कोथरे ना मेटेरोलॉजी रे कोथरे मेटेरोलॉजी क्लियर वेरी गुड क्लाउड ड्रॉपलेट जदि पचारे आपण माने कोन कहबे ना मैम क्लाउड ड्रॉपलेट इज अ लिक्विड वाटर सस्पेंडेड इन एयर जोटा कि माने हमरा टाइनी टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट को हमें कोन कहूचे ना क्लाउड ड्रॉपलेट्स ओके सो वेपर तो ऑलरेडी आपण माने जानि संती रेन ड्रॉप आपण माने जानि संती वाटर फॉलिंग को हमें कोन कहूचे रेन ड्रॉप बोली कहूचे चलो तो नेक्स्ट व्हाट इज द कॉज ऑफ द कोन ता एक्सन वाल्डेज कोन अछि एक्सन वाल्डेज ऊपर क्वेश्चंस मैम हबनी कि मैम बी हबनी कि कौन बी अच्छी ऑप्शन टी देखिदबा ए क्लाउड ड्रॉपलेट वाटर वेपरटा जनरली आमे गैसियस स्टेट जो थाए तेणु आमे ताको गैस बोली नौचे बट ये क्लाउड ड्रॉपलेटटा समवेयर 30% एक्यूरेसी आसी जीवो जदि आपण माने नेबे कोन क्लाउड ड्रॉपलेट को बट एक्यूरेटली आपण माने चूज करत मैम आपण डॉग लवर ना कैट लवर मु मो मामा लवर बुझिलो
मो दुनिया रे सबठु अधिक मो बापा मां को भल पाए तापर मो भाई की भल पाए बाकी आ का को मु क्यू रे आनेनी हैला चलो व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सन वाल्डेस ओके राइट आंसर दियो oil tanker which sank in 1989 along the coast of Alaska and marine life seriously affected. So right answer कौन हबो ABCD? There are four options are there. Tell me what will be the right answer. What will be the right answer? oil tanker guys, oil tanker कथा आसीबो कोन आसीबो ना तो ऑयल टैंकर जोटा कि डिस्क्राइब करूची कोन गोटे इवेंट जो थिरे हमें कोन ना एक्सन वाल्डेज ऑयल टैंकर रैन ग्राउंड इन द प्रिंस विलियम साउंड हमें कहि परिबा जोटा अलास्का रे हेतिला केबे हेतिला ना मार्च केबे मार्च 1989 रे हेतिला causing कौन हेतिला ना ए मेजर ऑयल स्पिल एंड सिवियर इकोलॉजिकल डैमेज जोटा फास्ट हमर आसला नी बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल हमर कौन हुए ना जते सब एक्वाटिक एनिमल अछंती से मानकर कौन तांकर लाइफ स्पैन ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पकाए से मानकर सडन डेथ हे जाए तो ए जो ऑयल स्पिल ता फास्ट केबे आसला ना 1989 रे हमर ट्रेजेडी रो आसिला ता परठु हमर कौन बार बार क्वेश्चन आसुची ऑयल स्पिल ऑप्शन रे आपण देखुसन ना ए ट्रेजेडी परठु ही आसुची बिकॉज ता पूर्वरु एते बड़ धरणर किछि ट्रेजेडी हेई नथिला ओके चलो नेक्स्ट को इंफ्रारेड एंड विजिबल सैटेलाइट इमेजेस माइट प्रोवाइड टेल मी द राइट आंसर कौन होउची हां हां सब बहुत सारा एक्वाटिक एनिमल्स मानकर डेथ हेथिला को ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाउड थिकनेस पळोचे पटकु न देखा जीवन त मानु को then a way of distinguishing between wet and dry clouds, a way of identifying clouds suitable for the cloud seeding, a way of distinguishing between new and old clouds. What will be the right answer? ऑस्ट्रेलिया रो एते भल पाइबा पठौछ इंडिया रे किंतु मिलुनी जा मो भाग्य चलो को infrared and visible satellite image might provide what might provide कौन हबो राइट आंसर लॉन्ग वाला ऑप्शन दैट लॉन्ग ऑप्शन कोटा टिके मु जानि परलिन त लॉन्ग ऑप्शन कोटा होची वो टिके मते सोनल लॉन्ग वाला ऑप्शन कोटा को कंसीडर करबा हमें ओके तो मोस्टली हमें कहि परिबा कोन दिस इज द वे ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाउड थिकनेस एंड अल्टीट्यूड कहि परिबा बिकॉज visible images show cloud top texture and the extent करो cloud रो ऊपर टेक्सचर को हमन को से शो करे yes so infrared को हमें कहि परिबा gives the cloud top texture top temperature ऊपर रिसर्च करी कि हमन को प्रोवाइड करे ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट ए काम एयर द एयर टेम्परेचर ए क्वेश्चन टिके थरोली पढ़ा टिके बुझिया को ट्राई कर क्वेश्चन लंबा अछि ताको देखि कि पैनिक होनी क्वेश्चन बुझो ए काम एयर द एयर टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस इफ द wind speed should increase to 30 knots with no change in air temperature the thermometer would indicate what thermometer एथरे कोन इंडिकेट हबो ऑप्शंस मते टिके देखो ऑप्शंस टिके देखो कोन हबो को ऑप्शंस कौन अच्छी मते को yes that is a much higher temperature than -10 degree celsius कौन हमर थर्मोमीटर रे शो करिबो कि हायर टेम्परेचर नो मैम then a much lower temperature than 10 degree higher शो करिबनी लोअर से शो करिबनी but जदि इंक्रीज होची कोन अछि ना एयर तो एयर टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस ताहाले हम कोन देखैबो ना टेम्परेचर एक्यूरेटली 10 डिग्री सेल्सियस ही देखैबो जदि 10 डिग्री सेल्सियस अछि -10 डिग्री अछि -10 डिग्री देखैबो -5 अछि -5 देखैबो जति कि अछि एग्जैक्टली सेति कि देखैबो दैट इज ए प्रॉपर्ली हमें कहि परिबा एक्सपोज द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर हमें कहि परिबा इक्विलिब्रेट्स टू the actual air temperature regarding कोन माने regardless of the wind सहित किछि इफेक्ट ताको पड़ेबनी clear is that clear wind doesn't change the thermodynamics of the temperature एटा को माइंड रे रख पवन हैला
जहाँ भी है एक्सटर्नल फैक्टर आसिला आमर थर्मोडायनामिक्स नेचर रे से चेंज किसी इफेक्ट पकाए ना क्लियर चलो ए नहले सी हम मन इच्छा माने ए नहले सी जोटी ए तुम मैंने आसो आइदर जड़े कह ए नहले बी हम आइदर हायर हम ना लोयर हम ए सहित सी को किए कहे मत कहल माने ढाबा बाड़ेब भी यही टाइप भी चलो at what time of day is the relative humidity normally at a minimum so dinner को टाइम रे हमें कहि परिबा ह्यूमिडिटी ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरा मिनिमम थाए कुह मते राइट आंसर कोन हबो मिनिमम थाए दिनर को टाइम रे हमें कहूचे कुह ऑप्शंस कोन अछि when the air temperature is highest just before sunrise about midnight when the air temperature is lower कोटा हबो राइट आंसर मते टिके देला राइट आंसर मते टिके दियो बी दीप्ति बी केमती हबो रे बी हबनी यस राइट आंसर कोन हबो तले एयर टेम्परेचर हमर हाईएस्ट थिबो एयर रो टेम्परेचर हमें कहू तले हाईएस्ट रहउची सेतेबेले हमें कहने कि ह्यूमिडिटी आसुची तो कहने भयंकर गोटे गुळुगुळी होउची जो गुळुगुळी वाट आसुची ता माने कोन की दैट इज योर ह्यूमिडिटी माने गरम असह्य गरम होउथो माने ब्रीथलेस वाला ह्यूमिडिटी होउची ओके इन दैट कंडीशन हमें कौन कहूँ ना टेम्परेचर सो मच हाई थिबो आमे ताको कंसीडर करूचे ह्यूमिडिटी साइड व्हेन कोन एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें केमिति कहूचे हमर जोटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अछि आरएच ताको हमें केमिति करूचे ना एक्चुअल वेपर केते अछि एक्चुअल वेपर केते अछि बाई केते ना तार कैपेसिटी केते कोन ना कैपेसिटी केते टोटल टाको हमें कोन कहूचे ना आरएच और हमें कोन ता कहूचे ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहूचे तापर हमें चूज करूचे द कैपेसिटी राइज करूची ना ताको पुनी स्लो डाउन होची कमउची क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट चलो द एटमॉस्फेरिक देखो क्वेश्चन ना टिके लॉन्ग अछि बट हु कंफ्यूज हबनी ओके सॉरी फॉर लेट जॉइनिंग पीहू हम भौणी मैंने सब कुआडे गले पीहू श्रिया कुआडे गला आ गोटे पिला ना पिकाचू से सब कुआडे गले मते को द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द माने एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हुए केमिति हुए मते को मेनली बाय absorption and re-emission of visible light by the atmosphere, absorption and re-emission of ultraviolet radiation by the atmosphere, absorption and re-emission of infrared radiation by the atmosphere. ओके एठी कोन अल्ट्रावायोलेट देइची एठी इंफ्रारेड देइची फास्ट विजिबल देइची देन हमर कोन ऑप्शन आसिला कोन ई पांचटा ऑप्शन दे देइची absorption and re-emission of the visible light अच्छा विजिबल लाइट तो कही दिला पुणी एटा कहीं देइची अच्छा एठी बाय द क्लाउड कहिची एठी कोन बाय द एटमॉस्फेयर कहिची अच्छा अच्छा ओके तो राइट आंसर मते कोन देला दिए राइट आंसर दियो कंफ्यूजिंग वाला मु जानि छी बट राइट आंसर दियो क्वेश्चन अछि कोन ना ग्रीन हाउस आसिला अपन मानक माइंड रे मैम क्वेश्चन आसी जाउची कि हमें इंफ्रारेड को रिलेट करिबा जते बेले अपन मानकर ग्रीन हाउस इफेक्ट आसुची आपण मानक माइंड रे क्वेश्चन अछि इंफ्रारेड कोठी इंफ्रारेड अछि विजिबल अल्ट्रावायोलेट इंफ्रारेड विजिबल सो आपण माने राइट आंसर एब्जॉर्प्शन एंड री-इमिशन ऑफ इंफ्रारेड कोन रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर बाय व्हाट बाय द एटमॉस्फेयर को हमें चूज कर परिबा कि ना ना एटा तो हबनी एटमॉस्फेयर हाँ ठीक अछि एटमॉस्फेयर द्वारा हबो बाय गैसेस द्वारा भी हमर हुए तो बाय द गैसेस आल्सो हबो राइट आंसर सी यस सी हे गला काली से माने को डाकी के आनिबी ओके पीहू देखिबा काली आछचंद्र नाही हैला हां सी हबो बफरिंग होउची टिके मिछ गुआनी भारी मिछ हे गलानी तमे आने मिछ कहउछ सब एमिति हुएनी ओके तो आमे राइट आंसर कोन चूज कले ना ऑब्वियसली दैट एब्जॉर्प्शन सब बेले जते बेले ग्रीन हाउस इफेक्ट कथा कहिला आपण माने उठी कोन इंफ्रारेड रेडिएशन थिबो ताकू टिके कंसीडर करिवे Is that clear? Very good. So clouds do reflect हमें कहि परिबा absorb करे radiation and affect the energy balance. ठीक है मैम भोको हेलानी खाइबा को दियंतु दहीबरा देह खराब हबरे कोन वर्षा दिने दहीबरा खाउछ किए त मानु कहला दहीबरा खाइबा किए कहला से दहीबरा खाइबा भूल लेके दहीबरा खाइबनी दहीबरा खाइबो देह खराब करे ज्वर हबा कहबा मैम क्लास को आस पेलुनी ज्वर होतला माडा खाइ जीवो करबनी सेमती नेक्स्ट को
The blueness of the sky is mainly due to अरे वाह गोटे बढ़िया क्वेश्चन रे आसी पूरा फेवरेट क्वेश्चन है कुआ बरा मते मागिले भी मु काहाकू देबिनी जा पाखरे थिबो मते कहले मु ताठू नै आसी बरा माने एही स्वाद रे भाग हेबो नाही बरा सहित नो कॉम्प्रोमाइज चलो तो को द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू yes blueness of sky हमें mainly due to कौन कहूचे ना scattering of sunlight by air molecules scattering of sunlight हमें कहूचे कि no ma'am but हमें absorption of the blue light by the air कहि पारुचे absorption of the blue light by the air हमें कहि परिबा हां टिके रो blueness तो अछि blueness तो blue light कौन मु कहूची रुआ रुआ रो मुंडा माडा हे जाइछि टिके पढिते तो scattering of sunlight by the अच्छा सनलाइट द्वारा हबनी आ कोन हबो हां हां ए हबो राइट आंसर मो मुंडा टिके माडा हे त माने बो बरा खाइ देबा कथा कहलो ना सेति में मु टिके कंफ्यूज हे गेली मो बरा खाइबा कथा कहिले मु टिके मुंडा पुरा मोर दोष बाहरी पड़िबो हैला हां रे ए ही हबो त माने मो बरा चोरी करिया कथा कहलो सेति लागि मु टिके कंफ्यूज हे गेली हां so आमे कौन कहि परिबा ना that is the scattering of sunlight by the air molecules because the shorter wavelength कार blue color रहउची has a blue color को हमें consider करि परिबा कि कोन ना shorter wavelength शॉर्टर वेवलेंथ सहित करिबा जे कि कोन जते शॉर्टर वेवलेंथ हिथिबो सेते मोर स्कैटर करिवो सेते मोर स्कैटर करिवो मोर बरा फेवरेट फूड चाउल बरा नहीं बिरी बेला बरा ढेंकानाल बरा है तो बाय द स्मॉल मॉलिक्यूल्स का द्वारा सपोज नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है तो स्कैटर्ड हम हमर ब्लू कलर लाइट फ्रॉम कोन मेनी डायरेक्शंस मेक द स्काई अपीयर ब्लू क्लियर मैम हम लोग हां ए जोठी केडी सर थिबे से जा जा सब करूसन त माने देखुथु आ कोन मु कहिबी को छाडू ना दिसे छाड़ पर the atmosphere near the earth's surface is heated from below which of the following does not significantly contribute to this heating मते को चला right answer what will be the right answer the atmosphere near the earth's surface is what heated from below कोउडर मते कुआ what will be the right answer which is अच्छा which does not significantly contribute अच्छा तार चारटा ऑप्शन अछि टिके पढिलो कोटा हबा राइट आंसर कोटा हबा मते कुआ फर्स्ट कोन अछि ना sorry conduction of heat upward from a hot surface yes hot surface ता हमर जते बेले heat हबो तो heat ता कोन ऊपर को जीवो कंडक्ट करिवो yes कोन न्यू आइटम फ्लाई फटर कहथि थाई फ्लटर रे थाई फ्लटर so go convection from a hot surface yes that also do absorption and of infrared energy that is being radiated from the surface that's true then heat energy सबुठे तो ठीक है heat energy from the earth ना heat energy from the earth interior कौन right हबो की ना कटके टुका छाड़ी देछि स्टार्ट लाइक केते आडे बांटी हेबी गोटे मनिष केते क्लास करी से क्लास चक्कर देह खराब हे जाइछि हुआ थाई फ्लैटर कहथि ओके yes right answer कौन हबो ना heat from earth's interior does not significantly what ना does not significantly heat the lower atmosphere is that clear so geothermal heat flux को जदि हमें देखिबा this is a tiny at the surface of the compared to the solar heating so it's negligible for the कोन daily हमें कहि परिबा even if the seasonal atmospheric heating पाई एटा कोन ना this is a negligible one clear ताको हमें evenly odd one out करि परिबा तो राइट आंसर कोन हबो डी जोटा कि does not पचारिछ हैला नेक्स्ट देखो the gradual physiological adjustment to slowly changing new environmental conditions is known as
What will be the right answer? The gradual physiological adjustment to slowly changing new environmental conditions is known as what? Is known as what? केडी सारंग मते पूरा अलग ग्रह रु खाइबा को मगेया पड़िया तथापि सार खाई हजम करदे कहबनी सांग आटे सा पाठ करी मैम मो ना रे एमती कहउचंती चलो राइट आंसर कौन हबो को मते that is acclimatization. So acclimatization कौन रहउची ना this is the physical adjustment. Acclimatization means कौन हमर physical adjustment example हम नहीं परिबा increase the red blood cell at altitude जेते ऊपर को हमें जाउचे हमर कोन altitude को ले हमर RBC increase हे जाउची हमर कोन सांस फुलीबा को लागुची. So that is I कहि परिबा relatable with the gradual physiological adjustment. So this is nothing but the physiological adjustment is the acclimatization. Clear? Is that clear? Very good. चलो. Salinization is मते को salinization हमें कहा को कहूचे. What is salinization? Right answer दियो. Salt in body. Sure. Yes, that is the accumulation of salts in body. Salts in soil नहीं, salts in body. जेते बेले salinization कथे आसिला सेते बेले accumulation of salts in body हमें कहि परिबा. Clear? Okay, done. चलो next देखो. Acid deposition causes what? The greenhouse effect to lessen, or हमें कहूचे lakes and forests to die, or acid indigestion in humans, or all the above are correct. हाँ पियूची पानी पियूची चला हुआ राइट आंसर कौन हबो राइट आंसर कौन कहबा ना दैट इज मैम lakes and forests to die. एसिड डिपोजिशन हेले कौन हुए एसिड जेते बेले डिपोजिट हुए हमर लेक रे भी एक्वाटिक एनिमल त डिफरेंट कथा छाडी दियो बट जेते लेक्स अछि फॉरेस्ट अछि सब गुडा हमर कोन डेड कंडीशन को पळे आसीबो डैमेज हबो डैमेज टू द लेक्स एंड फॉरेस्ट हमें कहि परिबा एसिड डिपोजिशन मींस कोन कोथरु आसे एसिड रेन रु आसीबो स्नो एसिडिफिकेशन रु आसीबो सो जोडा कि हमर कोन सॉइल को हेला या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज को हमर कोन इफेक्ट पकेइबो दैट मोबिलाइज द टॉक्सिक मेटल्स एंड कैन किल द एक्वाटिक लाइफ एंड weaken the forest. Okay, काको forest system को weak कर दबा. Next, melanorian. Sorry, that is the melanonia. That is a skin cancer. Okay, is associated with a जो melanonia is a skin cancer type. This is associated with what? Ozone accumulation, ozone depletion, acid rain or allergens. कहा सहित आमे relate करछ मते कहिला. आउ all थिले आउ कोन करिबे हम. ऑल ऑप्शन ने आसीबनी काई हबुछ मौसमी कहूच ना क्वेश्चन पचारछ विश्वास करो माने जा होउछ माने मु तुमको क्लास रे कहिबी कि राइस ब्रान ऑयल और रिफाइन माने सनफ्लावर ऑयल भीतर कोटा भला ना मु तो सनफ्लावर ऑयल खाऊ नहीं मु तो मेनू कोन कहि मते को चलो राइट आंसर कौन हबो को ऑब्वियसली जेते बेले स्किन ऊपर किछि भी क्वेश्चन आसे ओजोन डिप्लीशन होउची दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दिस इज द कॉजेस ऑफ द स्किन कैंसर एलर्जी माने विवेक कोठी थिले तम विवेक टिके बाधा दोनी एमिति क्वेश्चन तम एमिति आंसर दोउछ कि स्किन कैंसर इज एलर्जी बोधे माने को जुग जुग रु तमे जन्म हला परठु बोधे सुनुथुबो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होउची दैट इज द मेन रीजन फॉर द कोन स्किन कैंसर ता परे भी तमे एमिति आंसर दोउछ कौन आउ कहबी मो विवेक तले पड़ी गलानी तुम क्वेश्चन देख आंसर देखी
So depletion of the stratospheric ozone. ओजोन लेयर आम डिप्लीशन को लेयर रे हुए एटमोस्फियर को लेयर रे हुए ना स्ट्राटोस्फियरिक लेयर रे हुए रिलेट करि पारुछ हाँ हाँ नमस्कार so UVB radiation to reach the surface को radiation आसे जो different layer हमर थाए this is the troposphere and this is the stratosphere so ए layer हमर कोन ना ओजोन फॉर्म थाए ओजोन थाए एठी हमर कोन आसे ना डायरेक्ट सन कोठु कोन ना UVB radiation आसे जोटा कि हमरा कॉज करे कोन ना ई मेलानोनिया that is a skin cancer disease बॉटनी स्टूडेंट बोली मु तुमको कहबी ऑयल रो डिफरेंस कोन गजब चलो when oil and gas resources are burnt they kill many forest and lakes भाई देखो मु ऑनेस्टली तुमको कहूची मु सोरिस तेल खाए मु रिफाइन तेल खाएनी बाकी जदि एंती किछि स्टिर फ्राई करी खाए देन ऑलिव ऑयल ही यूज करे तो अब मते सनफ्लावर पसंद न तो मते काई पचार मु कोन कहबी when oil and gas resources are burnt they kill many forests and lakes by what deforestation water pollution acid rain or forest fire what will be the right answer what will be the right answer tell me number 13 D amar kon asila oil and gas resources are burnt they kill many forest आसी गला माने हमर कोन एसिड रेन को आखी बंद करके एसिड रेन को चूज करिवे yes हाँ ना आसी गला क्लास को तमे ही रखिबा शपथ मोर चलो तो को that is burning fossil fuels released but ना SO2 लाइक हमर सल्फ्यूरिक एसिड हमें कहि पारुछे एंड हमर नाइट्रोजन ऑक्साइड कहि पारुछे NOx कहि पारुछे व्हिच कोन कन्वर्ट द सल्फ्यूरिक एसिड और जोटा हमें नाइट्रिक एसिड इन द कोन एटमॉस्फेरिक एंड हमें कहि पारिबा एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स एज अ एसिड डिपोजिशन सो से माने कोन हेवी पार्टिकल हेई की हमर एटमॉस्फेयर रे हेवी बनी जानती ता परे हमर कोन फॉर्म करंती इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इन द दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एसिड कोन डिपोजिशन एसिड रेन भापरे आसंती मैम आपन को डिस्ट्रिक्ट रो को फूड भलो देखो ताकू कुहंदी बरा अपचारिबनी हेला चलो soil pollution is caused by soil pollution कोथि पई हुए मते कुआ soil pollution is caused by aerosol ozone acid rain or pan कुआ what will be the right answer right answer दिया बरा रे माने मु जदि मरी भी जाउथि बरा थोइ देले मु पुनी बंची जीवी तो बरा को मते मागिबनी केते बेले हैला तो को soil pollution is caused by what soil pollution is always caused by what this is most likely हमें कहि परिबा with what will be the right answer very good that कोन कलणी soil pollution असलाणी aerosol रु कोन कहिलणी soil loss पचारि छि की soil loss एठी पचारि छि जे aerosol मारुछ कोन होउछि तमरा ना that is the acid rain so acid okay so हमें कौन कहूचे yes acid rain that can change the whole soil chemistry हमें कहि परिबा acidify the soil करूची लीची आसुची जोडा लीच न्यूट्रिशन आपण माने जानि थिबे लीच न्यूट्रिएंट्स करूची even that mobilize the toxic metals in the soil so this is a major cause of the soil degradation हैला या फिर soil pollution is that clear aerosol hele that is deposits of the particles that can what na alter the soils जोडा excess हमरा deposit हुए particles हमरा soil भीतर हमें ता कहूचे aerosol okay that सेटा हमरा pollution या फिर हमरा कोन degradation रे हमरा यूज हबो ना clear चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ठीक है तुम मन को पई
अच्छा क्वेश्चन 9 so this is the Vedang teaching batch guys हमर आर्ट्स रे ऑलरेडी प्रभात 1.0 अछि एसएसबी टीजीटी पाई हमर कोन पीसीएम बैच सीबीजेड बैच अछि जोथिरे बी फॉर बॉटनी मु आपण मानकर पढौछि एंड बहुत जल्दी आपनकर जूलॉजी भी मु कवर अप करिवि एंड केमिस्ट्री हमर शताब्दी मैम पढौछंती एंड मैथ आपण मानकर पीसीएम रे देखुछंती कोन जोगेश सर आपनकर कंप्लीट करूछंती शताब्दी मैम आपनकर केमिस्ट्री करूछंती हमर रिया मैम भी आपनकर फिजिक्स क्लास नउथिले बट एबे तांकर टिके फैमिली इश्यू अछि सो से कंटिन्यू करि परिबेनी तापे हमर कोन फिजिक्स टीचर भी अलगा पढौछंती आसुछंती जल्दी हैला तबे पिला सब देखिया कहउछंती आस आस मुंह देखा so what is hibernation and estivation मते को what is hibernation and estivation सेम ऐप नहीं टीचिंग रो ऐप टिके डिफरेंट अछि मौसुमी एंड यार ऐप टिके डिफरेंट हैला वेदांग क्लासेस डिफरेंट जोथरे आपनकर वन डे एग्जामिनेशन रिलेटेड सब क्लास हबो वेदांग टीचिंग इज ओनली अबाउट द टीचिंग एग्जामिनेशन ठीक अछि एबे जस्ट सरला परे परे आपनकर टीचिंग रे मोर क्लास अछि बॉटनी रो चलो so what is the hibernation and estivation मते को राइट आंसर कोन हबो what is hibernation and estivation that is what option आप गोटे लंच हम कि लंच हेनी आप गोटे गोटे आप रे क्लास डिफरेंट आप गोटे गोटे लंच हम गोटे गोटे आप रे केते टंका खर्च होउची मौसुमी कोन तमे जानुच छाड़ thermal adaptation shown by the animals is what this is the hibernation and the estivation what hibernation and estivation मैम वेदांग एप्लिकेशन लिंक इन तो हिंट कौन लिखुछ हम जानि पारने को चैनल लॉन्च हबा गोटे चैनल तो अच्छी ना वेदांग टीचिंग रा चैनल ऑलरेडी अच्छी क्लास मोर होउची एबे आपण मानकर प्रीवियसली विवेक तमे जो क्लास टा करूथिले आसी सेटा कोठी थिला जो आपण जियोग्राफी क्लास करूथिले सेटा कोठी थिला वेदांग टीचिंग रे ही थिला सेम एप्लिकेशन हां हां मौसुमी सेम एप्लिकेशन हैला ओके so hibernation and estivation का कहूचे that is the thermal adaptation shown by the animals clear very good चला next question for you fog that most often forms as warm rain falls into a cold layer of surface air is called what is called अरे वाह रेडमी right कौन हम radiation fog evaporation that is the mixing fog or that is the advection fog or that is the off flow fog what will be the right answer what will be the right answer देखो कौन कहूची ना fog that most often forms as warm rain fall into a cold देखो warm आउ cold जेतेबेले मिसी जाए that means निया ऊपर पानी पसी गले गैस हे जाए डायरेक्ट कौन करिवो ना evaporation fog हेसिबो मन रखि परिबो रिलेट करि परिबो निया सहित पानी मिसिबो वार्म सहित कोल्ड मिसिबो डायरेक्ट एवापोरेशन गैस हे क्लियर आ किछ दरकार नो मैम रेडिएशन फॉग फॉर्म्स बाय द कोन नाइट टाइम रे हमें कहि परिबा रेडिएशन फॉग हे परिबो कोन टोटल कूलिंग सरफेस रे हमर रेडिएशन हबो ओके एडवेकेशन फॉग हमर को टाइम रे हबो ना मॉइस्ट एयर जेते बेले थिबो दे मूव ओवर ए क्लाउडर हमें कहि परिबा सॉरी मूव ओवर ए कोल्डर सरफेस हमें कहि परिबा in that condition हमें कौन ना advection हे परिबो okay next देखो fine organic or inorganic particles suspended in air is called what is called what so fine organic or inorganic particles suspended in air is called what particulate pollutant gaseous pollutant aerosol or none of these what will be the right answer what will be the right answer fine organic or inorganic particles suspended in air called what this is called the aerosol
ऑलरेडी मु कहिची जेतेबेले किछि माटी सहित मिसिबो ताकू आमे कोन कहबा ना एरोजल कहबा कोन कहबा ना एरोजल इज द सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन द गैस और आमे कहि परिबा व्हाट इन अ गैस और एयर दैट इंक्लूड्स कोन ना हमरा डस्ट मिसुची इवन सूट मिसुची सी सॉल्ट मिसुची ड्रॉपलेट्स मिसुची सब को इंक्लूड करके आमे कहि परिबा राइट क्लियर चलो तो नेक्स्ट CFCs are used as chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are used as what? Tell me what will be the right answer. रेफ्रिजरेटर तो यूज भी हुए इंसुलेटर भी यूज हुए एरोजल प्रोपेलेंट्स रे भी यूज हुए खाली रेफ्रिजरेटर मारी की ए भाबी की आंसर टी चूज करके आसीबन दैट इज ए बी सी ऑल ऑफ द ए वेरी गुड दैट इज ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर क्लियर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को गोटे ओजोन डिप्लीशन एजेंट बोली मन रखी था दैट इज द मेन एजेंट ओके चलो मते को रामसर कन्वेंशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ अच्छा अच्छा सिला रामसर कन्वेंशन कथा पछाडी देला मते को बेसिकली रामसर कन्वेंशन हमर कोन केबे हेइथिला ना रामसर कन्वेंशन 1971 रे फॉर्म हेइथिला हेइथिला ना नहीं मते को यस मैम हेइथिला दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट ऑफ वेटलैंड्स कोन ना वेटलैंड दरकार आउ टोटल हमर ओडिसा रे केतेटा रामसर साइट अछि मते कहि देलो 1 2 3 4 5 6 7 8 केतेटा अछि यस यस ईरान रामसर सिटी गोटे ता पाखे रहितला मते को 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड दैट इज 6 नेक्स्ट the earth's atmosphere is divided into layers based on the vertical profile of कोन ना vertical profile को हमें देखुचे एयर प्रेशर एयर टेम्परेचर एयर डेंसिटी और विंड स्पेस और विंड स्पीड कोटा को नहीं के हमें राइट आंसर चूज करछे मते को वर्टिकल कथा कहिला वर्टिकल कथा कहिला atmosphere layers that means कौन troposphere stratosphere mesosphere thermosphere पर्यंत भी जाओ are defined briefly by how temperature changes with the height that means lapse rate inversion etc ताको हमें रिलेट करि परिबा that means the air temperature that means what ना air temperature द्वारा प्रेशर हम जदि आपण माने देखुथबे एयर डेंसिटी हमें कोन कहि परिबा कि एयर प्रेशर सपोज ला एयर प्रेशर हमें कोन कहि परिबा ना हमर कोन मोनोटोनिकली हमें देखिबा विथ द हाइट देयर इज नो लेयर बाउंड्रीज डिफाइंड बाय द कोन प्रेशर जोन प्रेशर किछि अछि कि नो मैम नहीं डेंसिटी फ्लो सहित आपण मान जानि परिबे डेंसिटी ऑलवेज फॉलोज बाय द टेम्परेचर क्लियर चलो the temperature at which water boils depend mainly on the temperature the temperature at which water boils depends mainly on air temperature, relative humidity, air pressure, air density or the specific heat of air. What will be the right answer? The temperature at which water boils depends mainly on what? Very good. That is on the air pressure. कहाँ उपरे ना air pressure उपरे because we know the boiling point depends strongly on the ambient pressure और हमें ताको ना atmospheric pressure कहूँ जोधरे कौन lower pressure at higher altitude जेते ऊपर को हमें पहाड़ चढ़ले कौन हुए हमारा breath problem हुए so हमें कहूँ जेते higher altitude को जाए हमारा pressure कौन सेति की कौन lower हे जाए clear yes yes so देते ऊपर को जीवा lower pressure at high altitude that is the lower boiling temperature also clear चलो next मते को in a temperature inversion कौन हुए air temperature increases with increasing height air temperature decreases with increasing height air temperature remains constant with increasing height or it is warmer at night than during the day what will be the right answer what will be the right answer 21 टा bounce हे गला काहे की कोन असुविधा लागे एते इजी क्वेश्चन अल्टीट्यूड ऊपर को गले हमर प्रेशर कम होची एटा भी तुम को बाउंस हे जाउची डिफिकल्ट क्वेश्चन रा त भलो मन रखुछ
राइट आंसर दियो तो कौन हबो that is a temperature increases with height over the layer over what over the layer that means air temperature increases with increasing in the height clear very good चलो नेक्स्ट देखो ए टर्म बायोटाइप मीन्स अच्छा बायोटाइप मीन्स कौन हम मते कुह टर्म बायोटाइप दैट मीन्स व्हाट that means all the individuals having the same genotype all individuals having what na same genotype that means hame kon koi pariba na biotype typically denotes that a group of organisms with identical or hame koi pariba very similar जीनोटाइपिक एग्जांपल आपण माने कोन नेबे कहंतु मते जेमति कि इंसेक्ट बायोटाइप्स दैट रिस्पोंड फॉर द सिमिलर टू ए प्लांट रेजिस्टेंस कोन जीन करिवो सपोज गोटे सिमिलर जीनोटाइप रेशियो रे हम देखिबा कोन गोटे प्लांट रो डिफरेंट वेराइटीज रो कोन सपोज आंबर वेराइटीज ऑफ आंब अछि किंतु से गोटे फिनोटाइप सॉरी गोटे जीनोटाइप रो ही बिलोंग करूची तर जीन गोटे आंब ही हमें कहूचे मैंगीफेरा इंडिका ही कहूचे बट डिफरेंट डिफरेंट अछि जेमति अल्फांसो मैंगो अछि हमर कोन सुंदरी आंब अच्छी वेराइटीज ऑफ आम्रपली अच्छी सो ये जो टाइप रे आंब से कोन गोटे गोटे वेराइटीज को डिनोट करूची नेक्स्ट देखो fatal degenerative lung disease caused by particulate asbestos is referred to as what is referred to what केडी सर पूरा पछरे पड़ जाउछंती जहाँ भी कले सर वीडियो बने दउछंती कोन आ कहबी को so fatal degenerative lung disease caused by particulate asbestos sorry that is the asbestos is referred to as what the asbestosis or that is the asthma or that is the allergy or that is the sinusitis what will be the right answer भारी लाज लगे मत मार गोटे शुणी क्लास सरले देखी सागे सागे प्राइवेट करी कहले मैम मु छाड़बीनी बट दे देछंती The fatal degenerative lung disease caused by particulate of the asbestos is referred to as what? Referred to as obviously that is the asbestosis. Okay. So asbestosis कौन होची? This is a chronic fiber. आमे कहि परिबा this is a chronic fiber lung disease. Okay. Chronic fiber lung disease. Clear? So cause कौन करे ना this can be caused the like this can cause of what na progressive respiratory failure चिड़ौच मते चिड़ी गले पुणी रागी जीवी जानना the radiations are harmful as it radiation केते बेले harmful हुए मते को that is causes skin cancer causes anemia alters body tissues or is unstable what will be the right answer what will be the right answer radiation the radiations are harmful as it radiations are harmful as it what is केते बेले हार्मफुल हबो रेडिएशन केते बेले हबो जेते बेले हमें अल्टर करिबा बॉडी रो टिश्यूज को when we are altering the body tissues we can relate that because through हमें कहि परिबा radiation means कोन ionizing that radiation damage the biological tissues and the DNA ता परे ही हमर कोन स्किन रो किछि प्रॉब्लम आसे that tissue हमें कहि परिबा alteration that tissue alteration is the fundamental
harmful effect which can lead to the cancer. That is anemia भी also bone marrow ଆମର कौन problem हुए affected भी ता द्वारा हुए. Okay. So in middle latitudes which cloud will have the lowest base? Middle altitude रे कोटा हमर कौन lowest base रहउछि मते कुआ. चलो. In middle latitudes which cloud will have the lowest base? That is that is the cirrostratus, that is the stratocumulus, that is the altocumulus, that is the cirrus. What will be the right answer? अमित पागल हेलानी. Next कुआ right answer कौन हबो? Obviously that is what? Now that is the stratocolumus. What is stratocolumus, guys? This is a low level cloud आमे कहि परिबा based often below 2 किलोमीटर भीतर हमर कोन रहइबो जो क्लाउड फॉर्म हुए जोडा हम देखुचे कहउचे ना पूरा बादलटा हमर मुंडिया ऊपर को पहाड़ को पूरा बादलटा लागिची सेटा हम कोन कहउचे ना पूरा लो लेवल ले जोटा लो लेवल क्लाउड को हम रिलेट करूचे दैट इज द व्हाट द स्ट्रैटोकलमस. ओके एमाउ कहि परिबा द वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस. हाँ टिके टिके आसी जाइछि आ साइंटिफिक नेम आ जोडा इजी अछि काई त किछ कहू ना के मैम एते इजी अछि भारी चलाक त माने. तो को द विंड डायरेक्शन इज wind direction आमे कहा को कहि परिबा the direction from which the wind is blowing, the direction to which the wind is blowing कोन अच्छा from which, this is to which, always directly from high towards low pressure, always directly from low towards the high pressure. पिला माने कहउचंदी माने अमित सर्च टा कोठी पडिथियो चैनल टोटल दीटा वेदांग टीचिंग नहले वेदांग क्लास को ऑन करियो सेथिरे जो सेक्शन सब थिबो तेरे सर्च को जाई देखियो अछि ना नाही नहले वेदांग टीचिंग को जिवो सर्च चेक करियो अछि ना नाही एईटा भी त माने एते हल्ला करियो अमित कोन दरकार आई छडा कोन कहबी कुआ तो विंड डायरेक्शन ऊपर क्वेश्चन राइट डायरेक्ट कुआ सो कोन हबो द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द विंड इज ब्लोइंग दैट इज द विंड डायरेक्शन और विंड फ्लो बोली हमें कहउछ. चलो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम पिरामिड एनर्जी पिरामिड प्रति स्टेप रे हमर केते ना 10% एनर्जी लॉस हुए सो आमे कोन कहउचे दिस इज ऑलवेज अपराइट कोटे अछि दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड नो ऑलवेज अपराइट क्लियर सरीला. हां हां नाइट क्लास आज अछि राति क्लास बंद हे परिबनी प्रलय हे जाऊ देहटा खराब थिला बोली बंद करथिली नहले राति क्लास बंद हुइनी. चलो the pyramid of energy in an ecosystem is always what is always upright मन रहिबो that is flow for the कोन टॉपिक लेवल जेते ऊपर को जाउची से अनुसार हमर कोन ऊपर को जाउची because energy is lost at each transfer केते ना 10% लॉस हुए कोन रेस्पिरेशन रे हीट रे हमर लॉस हुए. चलो so the barnacles growing on the back of whale is an example for that is mutualism, that is the parasitism, that is the that is the amensalism or that is the commensalism. What will be the right answer? What will be the right answer? That is what? Now that is the commensalism. What? Na commensalism. Commensalism कौन actually? This is हमें कही परिबा that is the barnacles benefit, that means the transfer and transport and food access. ताको हमें कौन कहउचे commensalism और ताको कौन कहउचे ना barnacles benefit कहउचे जोथरे कि while the whale is largely unaffected during the period. So classical commensalism रिलेशनशिप हमर कौन होउची ना जते बेले बहुत ही कम संख्या रे हमें कहि परिबा फूड ट्रांसफर जो हुए ट्रांसपोर्ट एंड फूड एक्सेस आसे सेटा व्हेल केस रे बहुत ही अनअफेक्टेडली रुहे. म्यूचुअलिज्म माने म्यूचुअलिज्म रे हमें कहिबा दैट इज वेरी बेनिफिशियल बट पैरासाइटिज्म तो बिल्कुल हबनी पैरासाइटिज्म हार्म करिवो द होस्ट बाकी
कमनलिज्म टा हमर कोन फ्यूल को छाड़ी की बाकी सब केस रे हमर कोन फूड ट्रांसपोर्ट को नै की ताकू सैटिस्फाई करिवो नेक्स्ट देखो व्हिच एसोसिएशन बिलो इज नॉट करेक्ट व्हिच एसोसिएशन बिलो आर नॉट करेक्ट अरे मौसुमी एमिति रे मु क्लास रु बाहरले तो सर माने कहिबे निहाती तो कुआ that is cumulus congestus unbuilt of that is the cumulus fair weather cumulus or what would be the right answer मैम ए टर्म्स मन रहिबनी हो आउ टिके इजी करके आनिबा जेमति मन रखिबा एटा खाली आंसर दियो यार आंसर खाली दियो बाकी इजी करके आनिबा that is which association below is not correct cumulus fair weather cumulus सहित तो हमरो yes cumulus is the fair weather cumulus हबो cumulus congest that is the unbuilt of ना एटा ही हबनी गोटे एलिमिनेट हे गले आ तीनटा ऑप्शन पढिबा दरकार नाही ओके unbuilt of आर कैरेक्टर हम कहिबा कैरेक्टरिस्टिकली ताकू केमति करबा ना प्रोड्यूस्ड बाय द मैच्योर colonimus ओके जोटा कि विल फॉर्म व्हेन द कोन जते बेले हम कहि परिबा ऑफ ड्राफ्ट रीच टू द स्टेबल लेयर जते बेले स्टेबल लेयर पर्यंत पहुंचे आ स्प्रेड करबा स्टार्ट करे हम इन दैट कंडीशन में कहि परिबा दैट इज द क्यूमुलस पीरियड कहि परिबा और ताकू कोन क्यूमुलोनिम्बस कहि परिबा ओके बेटा स्टेबल लेयर को पहुंचा पूर्व बट जते बेले स्टेबल लेयर ऑलरेडी पहुंची सारी थिबो आमे ताकू अनविल्ड टॉप ऊपर को जाउछ बोली कहिबा सबु ईवीएस रा टॉपिक सबु ईवीएस रा ही टॉपिक हां तीन चारटा क्वेश्चन टिके टफ हे जाई छी आई एडमिट दैट ताकू टिके बुझेबा थ्योरी क्लास रे तमन एप्लीकेशन को आसो ए टॉपिक ऊपर मु तमन कर क्लास ने भी बुझी जीवो इजी लागियो बहुत इजी तमन नै भाबिबो इंग्लिश रे भी ए वर्ड हमें देखि नथिलु सुनि नथिलु मैम आंसर गोटे वर्ड रे आंसर गोटे मीनिंग रे आनिबे बहुत लॉन्ग हे जाउची कंफ्यूज अच्छा ठीक अछि मते भी लागु छी एक्चुअली एटा ओसीएस लेवल क्वेश्चन टा मोटे चिपके देथिली बट नो समान को डिफिकल्ट हे छिबा यस यस बुझी गली हाँ हाँ ओसीएस लेवल क्वेश्चन आनिथिली बारी पांचटा आपनकर क्वेश्चन ओसीएस लेवल मु मिक्स करिथिली ताकू टिके ट्राई करबी नेक्स्ट क्लास रो से टाइप रो क्वेश्चन आनिबा नाही चलो मैम कैन आई आस्क समथिंग नो प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग बिकॉज एबे टीचिंग रे पुणी बॉटनी क्लास अछि एई तमर क्लास एठी एंड कली संगे संग पुणी खाली स्ट्रीम की चेंज होबा दैट्स इट आउ किछि नै हाँ सर ठीक है ऐसे चेंज कर दियो स्ट्रीम की जल्दी टाइम है हाँ हम लगे देबे अपन चेंज कर दियो चलो बाय 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 टीचिंग रे जो मैंने क्लास करार अच्छे आसी जाओ गाइस होला।